Okay, so good morning everybody, and once again welcome back to today's class. Today we are on the day number 39 and we are going to be discuss today about the integration. Okay. Now when we talk about the integration, what this mean? If I come here and show you, integration means that connecting two tools together, right? मतलब इन दोनों को बीच में से अगर मुझे कनेक्ट करना है, like normal example, laptop and mobile. I want to connect it to transfer the songs, files, photos, images, etc. Okay. So to do the integration, the important point is that we need 3 or 4 basic things. And this is a fundamental of integration. Either you do any integration with ServiceNow. You can do the integration of ServiceNow with SAP, Remedy, Jira, or SolarWinds, Com, WhatsApp, Teams, Slack, SMS. मतलब आप ये सब इंटीग्रेशन इजिली कर सकते हैं. ठीक है. If I convert that example in another example now, let's say I want to send a letter. What I need mainly if I want to send a letter to Harshal, क्या क्या major requirements रहेंगी मेरी? Address. Number 1, address. Okay. और what is the subject? नहीं, वो तो ईमेल हो गया यार, वैसे नहीं. Matter. ठीक है, एड्रेस हो गया. जो सब्जेक्ट नहीं बोलेंगे इसको बोलते हैं बॉडी. बॉडी. ठीक है. उसके बाद में you require means is that a stamp actually? क्या चीज? Stamp. नहीं, वो भी ठीक है, लिव इट. स्टैम्प चलो, इसको हम बोलते हैं ऑथेंटिकेशन. ठीक है. If I convert these 3 parts, we call address as a endpoint URL. Endpoints. कि ultimately where it should go. Body we called as a body only, or we can say the field we are sending. Okay, and table. Authentication means because it is the integration of the 2 tool. Do you remember that when we do the update set, we have a authentication to retrieve the update set from my instance in Harshal instance? Means we need a username password who can go to that instance and can pick up the things and bring the things for me. That is called authentication. If I divide this particular discussion from the consulting perspective, then I can say if I want to do the integration, I need endpoint URL, number 1. Then I have to do the table to table level mapping. Which table I am using in my instance and which table it is going to be saved in the third party instance. But ServiceNow call any other tool which with you are going to be with which you are going to be integrated is called a third party tool. Okay. Once we have a table to table mapping, then we go for the field to field level mapping. Example, अभी तो हम ServiceNow की बात कर रहे हैं, right? ServiceNow to ServiceNow integration. It means both have the same tables, same fields, easy integration करना.
right? But if I want to integrate ServiceNow with Remedy, let's say, ठीक है? अब in ServiceNow we have an incident table, but in Remedy it is called SC, SNC, let's say incident. ये टेबल का नाम है, ठीक है? INC incident. IMC incident, right? Sorry, not INC, IMC. So it means I should know that what is the table name in the remedy. ये तो हो गया. Now about the field. अब in the service now, in the incident, we have incident.state. But in the remedy, we have IMC underscore incident.status. That is called field to field level mapping. वैल्यू इसमें भी वही है जो इसमें, लेकिन फील्ड का नाम अलग है, ठीक. एंड थर्ड, वी डू incidents dot state dot value to IMC underscore incident dot status dot value, कि which value I am passing here should go and save here. Example is that in ServiceNow, in the incident management state, we have a in progress, but in remedy, in incident management, we have a assigned state. How the lifecycle work in ServiceNow? New, in progress, resolved, and closed. Let's say this example. And how it's work in the remedy? New, assigned, progress, resolved, and close. Now in this two, this is extra. Matlab, when from the service now I am sending this state in the body, it should go this state in the remedy. ये कंसल्टिंग का काम है सारा का सारा. So first we do table to table mapping, then we do field to field level mapping, then we do field value level mapping. Now these things, अतुल अब इसमें तो अलग हो गया स्टेट. How we will handle this? And this concept is called data massaging. मतलब उसको थोड़ा सा क्या कहते हैं, उसको डेकोरेट करके प्रेजेंट करना, उसको कन्वर्ट करना, देखना कि कौन सा वैल्यू आ रहा है और हाउ आई कैन चेंज दैट वैल्यू एंड शो इट. और ये काम होते हैं मेरे स्टेजिंग टेबल में. Remember the concept of the import set. If you want to do any kind of a changes, then you have to use the staging table, import set table. उसी में होता है. Once you run the transform, it's done. So, and also one more thing, ये तो हो गया यहाँ पे टेक्निकल हो गया. If you come back on the process part, I have to be understand as is process of in ServiceNow and as is process of remedy. Now, if India, you want to send a letter, what you can do? You write a letter, go to post office, put the stamp, it's clear. But in here in UK, the concept was a little different. I want to send a letter, I go to Royal Mail. They say, sorry, we don't accept this letter because it don't have a QR code. To send this letter, you have to go to the post office. मतलब Royal Mail भी it's a this thing like a post office only, but they denied me. Then I go to the actual post office, submit that letter,
and it has been done. So we have to be understand the as is process. अब जैसे ये है, ये नहीं सॉरी ये दो अलग अलग प्रोसेसेस है. So being a consultant, I have to do a mapping. If I click or if I create an incident which is in a new state in ServiceNow, what will be the state in the remedy? It's in progress, what should be the state assigned to? And vice versa as well. On hold hai, then what should be done? This is very easy use case. बहुत easy use case है ये. Think about the change management, where we have approvals, we have 6 to 7 stages. Task भी है, task states भी हैं, a lot of things are there. How difficult it is the integration of change management. ठीक. So what we are going to be discuss now. हम क्या करेंगे? We have two instances. Instance of LNG and we have instance of Harshal. We will create one incident here and you will check that incident should get created here. सिर्फ इतना ही. ठीक है. सिर्फ हम इतना ही करेंगे इसमें. But we'll see that how this work on the runtime. Runtime is as soon as I click in the submit button in ServiceNow, it should get created in the Harshal account as well. Harshal instance as well. Okay. Now you are seeing this line, right? Yeah. What is this line called? This is called application processing interface. Remember the example of that waiter. Joe, who will take your order, go to kitchen, ask someone to prepare the order, bring the food, and serve to you. ServiceNow provide a lot of APIs. हर चीज का API ServiceNow ने दिया हुआ है. But we should know that what API we have to be used. ठीक है? तक everybody. Yes. Good. Let's come to the ServiceNow. This is my instance. Okay, you can see, and I can log in now. ठीक. Now what we will do? Is the end point of this. Yes, we will see the end point of this. Oh yeah. ठीक. Now go here. API. REST API Explorer. यहाँ पे तो दो APIs होते हैं, एक REST, एक SOAP. Practically, if I tell you now, I have no idea that what is the technical difference between these two. But we use the REST API. REST API Explorer. हम देखें ना ये बनती कहाँ से बन के आती है. Because this is what our code is there. ये हमें सारा कुछ यही से मिलेगा हमें. ठीक है. इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है. एक तो ये कि आपको भेजना कहाँ है, व्हाट इज योर एंड पॉइंट URL, और सेकंड ये आपको करना क्या है. वैसे करना क्या है मींस
I can send an incident from my instance to third-party tool. Second, I want to delete an incident. Third, I want bring the data from third-party tool in my service now. इनको करने के methods होते हैं अलग-अलग. Get, create, retrieve, modify, delete, and update. Get, as the name says, कि कुछ लेके आओ. If you want to get something from the third party tool in your instance via integration, then we use the get method. If I want to send some data from my instance to third party, then I use the post method. Post ये होता है ना कि यहां से जाके post कर दो कुछ. If I want to modify something, कुछ value change करनी है, then I use the put method. And if I want to delete a record, then use the delete method. Now the problem is that what is the patch then? Update a record or modify a record, दोनों में क्या फर्क है? This will be homework for you to be find out. ठीक है, ये homework है आपके लिए. And here you can see the APIs. What we're doing table to table level API. इसलिए हम table API use कर रहे हैं. Do you have any other APIs as well? Let's do anything for the change. देखो, CMDB का अलग है API, calendar change request का अलग API है. Means for the module wise we have a API. तो बोलो मुझे सिर्फ change पे काम करना, हाँ change का API है ना, कोई दिक्कत नहीं है. We have incident API देखना. Incident का नहीं है, टेबल मैपिंग से यूज करेगा क्या? अच्छा वो endpoint URL लेंगे. ठीक है. अभी क्या है, जब मैं छोटा था, when I was a kid, I want to know that how this post office things work. कि if I am writing a letter to anybody, how that letters get delivered. So what I did once, I write a letter. In that letter, I put my address only. अब post office को क्या पता? In the to, I mention my address. In the from, I mention some address from my hometown only. I go to post office, put a stamp, post the letter, and after 2 days I receive the letter as well. To make sure, yes, this is the right process to send a letter. तो अब हम क्या करेंगे? We are going to be test one thing, that if I want to send a letter, if I want to make sure that my API is working fine, then I am doing a little testing here. ठीक है, हम यूज करेंगे पोस्ट मेथड. ठीक, क्योंकि मुझे यहां से भेजना है. किस टेबल पे काम करना है? मुझे काम करना है इंसिडेंट टेबल पे. ठीक है, एंड दीज आर फ्यू पैरामीटर्स. अब if I tell you one thing, when we do guys are doing a testing for the, let's say, incident management, do you fill all the fields? मैंने तो जो मैनेजर से वो भरते हैं फटाफट चेक करने के लिए कि is working fine or not. So something similar is given here, that if you want to test something, you can put the field names here just to test that it is working fine or not. ठीक है, तो ये कुछ पैरामीटर्स API के हैं. You can put these parameters and you can see this part. Generally, I don't go for this one. We'll go the actual this thing API. ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा बॉडी वाला पार्ट. ठीक है, ये जस्ट एग्जांपल है which we're discussing. We'll go for the actual APIs now. And this is what called header. If you notice, sometimes we receive some letters
And in that letter, we have another envelope. Please put your form here and send it back to the same address. कई बार होता है गवर्नमेंट के होता है कि आपको एड्रेस भी लिखने की जरूरत नहीं है, हम आपको सब लेटर वेटर पैक करके भेजेंगे. You just put your signature and put in that envelope and send back to us. ये header part होता है. That I am sending a request in the JSON format. And I want response should become in the JSON. अब यहाँ पे JSON भी टेक्निकल वर्ड है, टर्म है JSON भी. REST API and the JSON. JSON, what I know from experience, I might little bit wrong. In the JSON file, we send only those attributes which is required for us or which we need to be fetch or to show or to display or to send. पूरी कहानी लिखनी नहीं पड़ती इसमें, JSON में ये फायदा है. But REST APIs में हमें पूरी कहानी लिख के भेजनी पड़ती है. This is what I know. ठीक है. And then in the letter we have a body here. ठीक है. अभी मैं कुछ नहीं कर रहा. I write a simple on the simple envelope. I write to and from. सील किया उसको, पोस्ट ऑफिस गया, स्टैम्प करवाया, पोस्ट कर दिया. Because post office don't not authorized to know that what is written in this letter. उनको सिर्फ एड्रेस चाहिए. So I did the same thing. So what I'm going to do now, I'm going to be click on the send. ये देखने के लिए कि अगर ये API का रूल, if this API is given by service is working fine, then I should get a response 201. Means a record get created in my system. A blank record होगा. Let's see अगर है कि नहीं, कुछ ऐसा है क्या? Will it create any blank record for me or not? ये देखो, बिल्कुल ब्लैंक रिकॉर्ड क्रिएट हो गया. कुछ नहीं ना इसमें, बिकॉज हमने API के थ्रू कुछ नहीं भेजा इसमें. बट वी गेट वेरीफाइड दैट यस अवर API इज वर्किंग फाइन. मतलब कोड तो यही है, चलेगा तो यही. अब देखो इसका रिस्पॉन्स ये गया मेरा रिक्वेस्ट में, हेडर में क्या क्या गया, ये सब चीजें. एंड व्हाट रिस्पॉन्स आई गॉट, ये रिस्पॉन्स बॉडी है देखो, ऑल ब्लैंक. आ गया ना इंसिडेंट नंबर, ये रहा. बट आप कहोगे तो ये तो गलत बात है. We need to be send the fields, we need to send the values. अब हम वो काम करेंगे अपना एक्चुअल APIs में. ठीक है. ये सिर्फ एग्जांपल वी सी कि हाउ दिस APIs has been built up. Because now we need to be sent to the actual person. मुझे हर्षल को भेजना है वो. ठीक है. So what we will do? We'll copy this. ठीक है. And now come back here. अब ये लिखेंगे REST message, ये वाला REST message. हमने पहले देखा वी सी कि इसको भेजने का तरीका क्या है. And now we will do how to completely send this. इसको कैसे भेजेंगे हम. So I am going to create my message now. ठीक. LNG to Herschel instance. सबसे पहले क्या पूछना है, एंड पॉइंट URL कहां भेजना है. कॉपी दिस, लेकिन इसको चेंज कर लेते हैं 200.561. मैंने कहा मुझे भेजना है इस एड्रेस पे. नेम है ये DENT, इंसिडेंट टेबल को भेजना है मुझे. ठीक है. ये तो हो गया एड्रेस. क्लियर यहां तक सबको.
Yes or no? Yes. Yes, yes. ठीक है, तो ये मुझे भेजना है ये वाला. Now if I want to be sent, let me save this as of now. ठीक है, हमने आगे क्या बोला कि if let's say I want to go to Amisha's house. Amisha is staying in a society and society has a guard. I reach to society. As soon as I try to be enter in the society, guard stop me. Sir, where you want to be go? I said I want to go to Amisha's house. So what is the flat number? How you know? That guard called to Amisha and say, Atul is there to meet you, your family. Yes. It means we have to be make a authentication here. Now तीन तरीके हैं. Either I'll put no authentication. That is not recommended. Either I will put basic authentication, or I put auth2, like multi-factor authentication, which we say करना वो वाला. We are going to discuss about the basic. अब basic authentication के लिए we need a basic authentication profile as well. हर बार तो आप username password enter नहीं कर सकते, right? So what we'll do? We'll create a new profile. I says it's Harshal instance. ठीक है. Username नहीं, username क्या था मेरा? LNG15 and password is. I'm not putting the this is instance name here. Why? वो हमने endpoint URL में डाल दिया सारा कुछ. And submit. This is my authentication done. Save. घर का एड्रेस मिल गया मुझे. ये है मेरी सोसाइटी का एड्रेस पूरा. एंड दिस इज माय फ्लैट एड्रेस. और अंदर जाने का मेरे को ऑथेंटिकेशन मिल गया. नाउ व्हाट नेक्स्ट? कि मुझे भेजना क्या है, लेके क्या जाना है, राइट? एंड टू डू दिस पार्ट विल गो टू द HTTPS रिक्वेस्ट. ठीक है. एंड वी विल क्रिएट द न्यू मेथड, क्योंकि वी वांट टू पोस्ट इट. मुझे अपने इंस्टेंस से वहां पोस्ट करना है. I'll put LNG2 and I'll change this to the post method. Endpoint URL in this. And ठीक. Authentication, I said take the authentication from the parent only. ठीक है. Save. क्योंकि देखो अभी हम ना मेथड्स कर रहे हैं, इसलिए हमें दोबारा से एंड पॉइंट चाहिए. हमें दोबारा से एंड पॉइंट चाहिए कि हम, क्योंकि अब हम मेथड्स पे काम कर रहे हैं, लेकिन ऑथेंटिकेशन सेम रहेगा. नाउ व्हाट वी टू डू? नाउ एज आई से, टेबल टू टेबल मैपिंग इज डन. नाउ व्हाट वी टू डू? वी टू डू द फील्ड टू फील्ड लेवल मैपिंग. ये इंपॉर्टेंट है यहां पर. Field to field level mapping. What we'll do now, we'll go to the HTTPS request. Check. And we will put our content here. We will put our content here. यहां क्या बताएंगे? Remember in the transform map, we have a concept. Field to field level mapping, source and destination. Remember? Yes, sir. जो import side का field है, it should be mapped to my target one. Target. ठीक है. So we have to be write that step here. अब वो यहां करना पड़ेगा हमें.
और इसको करने का एक फॉर्मेट रहता प्रॉपर, ठीक है। व्हाट आई विल डू, आई शो यू वन आर्टिकल इन कम्युनिटी ServiceNow to ServiceNow integration community. Read this article. I always use this article in my trainings. मैंने एक्चुअली इंटीग्रेशन यहीं से सीखा पूरा का पूरा. Let me post it here and we'll come back here. ठीक है, because I want to copy one this thing. कोड फ्रॉम, हमने ये सारा काम कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया. ये now we are on this particular part. What it's saying, क्या करना है हमें ये बताना है अपने, सॉरी, अब हमें यहाँ पे लिखना है कि सोर्स में से आई एम टेकिंग ओनली वन फील्ड एज ऑफ नाउ. फ्रॉम द सोर्स आई वांट टू सेंड द शॉर्ट डिस्क्रिप्शन टू द टारगेट एंड दिस इज द फॉर्मेट वी हैव टू बी यूज. ये क्या है, लेट्स राइट इट हियर. ब्रैकेट्स, डबल कोट्स. अब यहां जो हम लिखेंगे ये बेटर गो हेयर, अच्छा ठीक है, चलो एक लिखते हैं. शॉर्ट अंडरस्कोर डिस्क्रिप्शन, दिस इज अ बैकएंड नेम. अगर मैं इसको यहां ओपन करता हूं, एक मिनट रुको, क्योंकि यहाँ पे फ्रंट नेम नहीं चलते, यहाँ पे बैकएंड नेम चलते हैं सारे के सारे. ठीक है, लेट इट बी लोड. ये वाला कॉपी, ये क्या है, मेरा सोर्स फील्ड का नाम है और इसको कहां भेजना है मुझे. आई वांट टू सेंड इट टू द डेस्टिनेशन. देन ब्रैकेट क्लोज, डबल कोट्स, सॉरी कॉलन, dollar and this. Now one thing important to be remembered, because we are doing the ServiceNow to ServiceNow integration. अब चाहे मेरा इंस्टेंस है, आइरिस से हर्षल इंस्टेंस, अन्वेषा इंस्टेंस, सुनीता, अमीशा, किसी का भी इंस्टेंस हो, उसमें फील्ड नेम सेम रहेंगे. सो वी आर कॉपिंग द सेम थिंग. बट अगर रेमेडी है, हो सकता है रेमेडी में चेंज हो. लाइक आई गिव एग्जांपल, राइट. In ServiceNow we have a state, but in the remedy we have a status. तो यहां पर state और यहां पर status आएगा. फिर this is what the consultant need to be do. ये हमारा काम है करना, field to field level mapping लेके जाना, to make sure कि जो fields the fields available in ServiceNow, we prepare an Excel sheet. Like in the incident I have 20 fields in ServiceNow. I am doing integration with the Jira. ये field किस field पे मैप होगा? We have to be write in the Excel sheet, and then we have to give this Excel sheet to our developers. Then they build these things. तो क्या है syntax इसका? This, अच्छा ये यहाँ पर है, कोड्स गलत लगाया हमने. This code should be ऐसे है ना? नहीं, चेक करें एक बार, एक ब्रैकेट और लगेगा. ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक एवरीबॉडी? Yes, sir. Good. Now, because we are sending only one field, so no semicolons at the last. अगर आपको कुछ और भेजना है, you can send it. ठीक. And now I'm going to be save this. Once you click on this, you can click on the
ऑटो जनरेटिव वेरिएबल्स, ताकि वो मैपिंग जनरेट हो जाए मेरी एक, ये देखो ये रहा, टू जनरेट अ वेरिएबल हियर, ठीक. एंड नाउ आई वांट टू टेस्ट इट. क्लिक ऑन द टेस्ट. 201. अरे सर आपने क्या किया, ये गड़बड़ कर दी. लेट्स गो बैक. मैं यहां पर एक वैल्यू पास करता हूं. फ्रॉम LNG ठीक, this and now test. What my intention is that कि in the Herschel instance a incident get created where the short description come this, and now I'm going to the Herschel instance. ठीक है, go here, search for the incident, click on the all, and incident get created. देखो हमने दो किया था ना, एक खाली गया एक ये गया. समझ में आई चीज? Yes. So now if you want to send more fields, you have to make a change. और देखो ये पूरा कोड है रिस्पॉन्स का कोड, जो ये पूरा XML ही और कुछ नहीं है ये. Now if I go back, if you want you can create one more field here and then proceed further. Description, short description सब ले सकते हैं यहाँ पर हम ऐसे ही. ठीक है, लेकिन अभी समस्या क्या है? The problem is that अतुल ये तो स्टैटिक डेटा है, राइट? इट्स अ स्टैटिक डेटा. आपने तो टेस्टिंग में बनाया और चला गया. हाउ आई कैन डू ऑन द रन टाइम? आई वॉन्ट कि इफ अतुल ग्रोवर क्रिएट इंसिडेंट फ्रॉम हिज इंस्टेंस, यहां से सबमिट पे क्लिक करे तो यहां पर इंसिडेंट बन जाना चाहिए. सॉरी, यहां एक इंसिडेंट बन जाना चाहिए. टू डू दिस पर्टिकुलर पार्ट आई हैव टू राइट अ बिजनेस रूल. अब हम चलते हैं बिजनेस रूल पे. ठीक है, ये भी मेरा इंस्टेंस है, यहां जाएंगे, बिजनेस रूल. क्योंकि रिमेंबर बिजनेस रूल इज द ओनली थिंग विच कैन पास माई वैल्यू. एंड लेट्स गेट द बिजनेस रूल ऑन द इंसिडेंट टेबल. This is very, 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 very basic example. सिर्फ समझाने के लिए कि इंटीग्रेशन कैसे काम करता है. In the nutshell, this is what we have to be understand. Now I'm creating a Herschel to LNG to Herschel incident. On which table I want to do? I want to do on the incident table. ठीक है, एडवांस when after insert. अब करना क्या है? I am writing a business rule. I am telling to my system कि I want to pass my incident from my instance to Herschel instance जब वो incident get created in my system. Go to advance. अब या तो कोड करना पड़ेगा, ये तो बहुत बड़ा काम हो गया. So what ServiceNow say? Go here and scroll down and click on this preview script usage and copy it. Okay, copy. Go to business rule. अतुल ये क्या चीटिंग है? ठीक है, क्या करेंगे हम इसमें? ठीक,
Now what we have to do here? If you see this particular part, it has everything for me. ये कह रहा है new WS REST message v2. It is calling a method called the REST message v2. इसके अंदर ही सारा कोड लिखा हुआ है. ये क्या नाम है? LNG2 HAR. ये मेरे REST मैसेज का नाम है और ये मेरे मेथड का नाम है. अतुल यहां तो फिर स्टैटिक वैल्यू जा रही है, लेकिन देखो दिस इज व्हाट आई वांट द रन टाइम, राइट? यस और नो? यही तो चेंज करना है ना. एंड इफ यू रिमेंबर दैट इन द बिजनेस रूल व्हाट वी यूज फॉर द लेटेस्ट इंसिडेंट, करंट, राइट? करंट डॉट. अगर मैं जिस पे काम करूं, करंट. so now we will make a change in the same. अरे कहाँ गया इसका कोड? वो रुको एक मिनट. I'll just see this code. देखो ये current dot short description. We'll come back here and we'll change. यहाँ पर डबल कोट्स तो नहीं है ना इसमें? नहीं है, ठीक है, गुड. करंट डॉट, क्योंकि दोनों फील्ड सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. बाकी डिलीट कर दो. बस इतना ही. सेव. डन मेरा काम. नाउ कम बैक हियर. ठीक है, लेट मी गेट अ न्यू इंसिडेंट. This is the first time I'm creating my incident now in my instance, and I want what I mentioned in the short description should be go to the Harshal instance. ठीक. ठीक, and save. Done. Go to Harshal instance, refresh. Incident get created on the runtime. This is what about the integration which you want to be discuss. ServiceNow to ServiceNow integration. Doubt, question, clarification. सर ऐसा मान लो कि हमने अभी 2 वे कर दिया उसको. ओके, व्हाट वी डन इन योर इंस्टेंस वी विल कॉन्फ़िगर इन माय इंस्टेंस. ओके, एंड मेक इट उसको 2 वे. हाँ, ओके, देखो तो मैं क्या, हाँ, टू वे के लिए क्या चाहिए मेनली? नंबर वन, फॉर द टू वे वी हैव टू पुट दिस, वी हैव टू डू दिस कॉन्फ़िगरेशन द बोथ साइड. मतलब दोनों में एंड पॉइंट कॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे. नंबर वन. ठीक है. नाउ द प्रॉब्लम इज दैट हाउ द सिस्टम विल नो कि मुझे इसी इंसिडेंट का रिकॉर्ड लेके जाना है. दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट? करेक्ट. वो तो लूप हो जाएगा फिर. लूप नहीं है, नहीं. I need something in my incident which my API can understand and bring the data. देखो अभी तो हमने क्या किया, हमने सिर्फ पोस्ट मेथड किया, भेज दो भाई जो भेजना है. What about the get method? Get method means out of 100 I need the answer for fifth one only, or the report from the fifth one only, or data from the fifth one only. So there is a field called the correlation ID.
Let me show you if it is there or not. रुको. इंसिडेंट पे है सर कोरिलेशन. Yes, there is a field called correlation ID. This is what has been used for the integration only. Here. Correlation ID and correlation display. And save. So whenever we do the integration, we pass the correlation ID as well. यहां पर. और ये ऑटोमेटिक जनरेट होती है API के थ्रू. If you go to this now, you will find this part. देखो इसने यहाँ पे शो किया हुआ एग्जांपल में. कहाँ गया वो? ये देखो ये रहा. कोरिलेशन आईडी पास किया हुआ है. ठीक है, तो ये हमें पास करना पड़ता है, which is get automatically created from the API. और उसके बाद ये यूज होता है डेटा को फेच करने के लिए. This is required if you want to do for the two-way integration. Even though for the one-way also we use this to make sure that our if correlation ID is not get generated, integration fail. So when you read this particular article completely, you can do this particular part. You have my instance, you have your own instance as well. You can do the integration. हो जाएगा. Nothing much. कोई ऐसा बड़ा rocket science नहीं है इसमें करने वाला. Easy है. This is one of the best article I found on this community for the integration perspective. ठीक है. So for two-way के लिए this correlation, sorry this one. ये जो field है ना, that is important, and that we have to pass when we're getting our REST messages. अपना API जब बनाए तब हमें वहां पास करना पड़ेगा इसको. System will create automatically, and then we can use this correlation ID for my fetching the results as well. This is all about integration. My question was different sir actually. मैं क्या बोल रहा था कि हम यहाँ पे अगर कोरिलेशन आईडी, ओके आपने क्या किया, एक इंसिडेंट बनाया दैट कम्स टू अनदर इंसिडेंट. ओके, अपना अनदर इंस्टेंस. ओके, अभी वो अनदर इंस्टेंस पे भी कॉन्फ़िगर किया है कि यहाँ जो आपने कॉन्फ़िगर किया वो पहले इंसिडेंस में भी इंसिडेंट बनाए, तो यहाँ पे सबमिट हुआ दूसरे में, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ क्रिएट नहीं होना चाहिए ना? क्यों? Why you want to duplicate it? What you are saying? You are saying let's say this is my instance. ठीक है? And this is virtual instance. आप मैंने यहाँ एक इंस्टेंस बनाया A. आपने कहा A जब बना तो वो यहाँ A बन जाना चाहिए. हाँ. अब आप कह रहे नहीं यहाँ A बना तो यहाँ पे दोबारा A बन जाए. ऑलरेडी A तो बन गया ना यहाँ पे, तो दोबारा इसको यहाँ लेके नहीं आपको. नहीं, तो मेरा क्वेश्चन वही है सर कि ये लूप में ना चला जाए, तो नहीं उसके लिए नहीं चलेगा लूप में. लूप में चलेगा ही नहीं. सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि आई डोंट वांट टू सेंड दिस इंसिडेंट टू अगेन टू द बैक? इट इज योर मेथड्स डिसाइड. मैंने पोस्ट मेथड किया है. आई क्रिएटेड पोस्ट इन माय इंस्टेंस, नॉट इन योर इंस्टेंस. ओके, अगर मैं आपके पोस्ट करूंगा, इफ आई पुट द सेम यूआरएल, यहां के लिए यूआरएल डालूंगा, फिर वो लूप पे चलेगा. ये तो बेवकूफी है ना, मैं क्यों दोबारा से पोस्ट करूंगा? ओके, मैं अगर फिर एंड पॉइंट अगर ये आपका अगर यूज नहीं किया तो फिर चलेगा कैसे ये? बस खत्म हो गया ना. फिर मुझे टू वे करना ही नहीं, मुझे वन वे चाहिए. मैं चाहता हूं कि जो यहां बन रहा है सिर्फ यहां बन के आ जाए, बस यहां से यहां नहीं जाना चाहिए कुछ भी. तो भाई अगर if I want to send anything from your instance to my instance, then definitely I have to create another get method in your post method in your instance first, जो यहाँ पे जाके receive करेगा. ओके भाई जब सर, हाँ जो आपने ए बनाया ना उसका सबमिटर कौन है, दिखाएंगे क्या?
आपके इंस्टेंस में? हाँ। सिस्टम होगा इसका सबमिटर। देखो मैं यूं ना, मैं यूं क्योंकि मेरे से ऑथेंटिकेशन किया ना आपने तो। पर आपका रिकॉर्ड मेरे इसमें है। ओके है ना, बस फिर हो गया ना भाई। भाई। बाय दिस यू गिव मी ऑथेंटिकेशन, राइट? और आप मुझे किसी और का यूजर नेम पासवर्ड दे दो अपने इंस्टेंस में, मैं उसका ऑथेंटिकेशन कर लूंगा अपने सिस्टम में। when ओके you मतलब when you go to हमको when you go to airport or when you go for any kind of a place where they need a ID proof, वो ये तो नहीं बोलते कि मुझे एक ID proof चाहिए। they say show me any government ID proof, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी दिखा दो। if you get, let's say you credit Amisha's account, I can configure Amisha's account in my authentication, बात खत्म हो गई। मुझे तो ऑथेंटिकेट करना है, by any way I can do it. If you give me a system admin, I can do a system admin. आपने अच्छा किया कि आपने मेरे नाम से बनाया, so that I can try, you can track it कि भाई कौन बना रहा है वाले इंसिडेंट्स। तो हमको एक यूजर इंटीग्रेशन के लिए रिजर्व रखना पड़ेगा। Actually, we use a different user for the integration purpose, and that is called a service account. That सर्विस user, अकाउंट हाँ, that इज user इट password never get expired. This is what the policy we use. ठीक है, clear everybody till this point? यस सर। Sunita, Anvesha, Mac, Amisha, Rituja. Yes. Yes. Good. Amisha, all good? हाँ. No, I was talking to Amisha as well. No question. Okay. Very silent. Mac, all good? Yes, all good. Now let's move to the another small topic. ठीक है, small क्यों है? क्योंकि this is a requirement. Now take example. अब वो इंटीग्रेशन से नहीं है, मतलब इंटीग्रेशन से है लेकिन जो हमारा मेन इंटीग्रेशन था वो टॉपिक क्लियर हो गया। Let's say there is a company called X. ठीक है, on day one, 20 people join this company. ठीक, now ServiceNow is just a platform. ServiceNow is just a tool for that company. लेकिन when you people or we people join a company, we got an update from HR that your user ID and password and email will be created in next few hours, because every company has its what I can say database between, not actually database, but to understand we can say it's a database which we call as an active directory. Active directory. Every company has one active directory. Anybody who join the company, his or her account get created in the active directory first. Now, if I say, Anvisha, in your company, how many tools you use in a single day? Atul, I use Outlook, I use my MS Word, ServiceNow, SAP, Jira, Remedy भी है हमारे पास. To raise a request, we use Abira and all the things are there. But now if you notice, you just log in your laptop and you can access any of the platform easily.
राइट क्योंकि ये सारे डिफरेंट डिफरेंट टूल्स है, प्लेटफॉर्म्स है. मे बी कल टुमारो Anvisha's company says sorry, we are not using the Abira now for the ordering anything. Guys, it's closed. We're not using Jira, we are using ServiceNow. Guys, we're closing ServiceNow as well. We're not using ServiceNow, we're using some other tool now. ठीक है. So to bring the user data from AD, we call it the short form AD to any of the tool, or mainly we talk about the ServiceNow, we use the LDAP integration. Light Directory Active Processing या प्रोटोकॉल कुछ ऐसा इसका है. इंटीग्रेशन मतलब once a user get created in AD, I want the same user should get created in the ServiceNow as well. अब असल बोलेगा सर आप वो यूज कर लो इनपुट सेट वगैरह, नहीं करेंगे बट नॉट डायरेक्टली, सॉरी नॉट इनडायरेक्टली, डायरेक्टली यूज करेंगे बट ऑटोमेटिक वे से. Nowadays this AD concept is also enhanced. Companies are using this thing, Microsoft Azure क्लाउड बेस्ड सारा कुछ. ठीक है, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है which we are going to be discuss. We are going to be discuss now how to integrate or how to do LDAP integration with ServiceNow. Means I want all the users who get created in the Active Directory, all the groups who get created in the Active Directory must be created in the ServiceNow automatically. To understand this part, we'll come back here and we'll search one thing. LDAP integration, ServiceNow. Image. ये basic and important fundamental. ठीक है, इसको थोड़ा enlarge करके देखते हैं अगर इसकी बड़ी फोटो मिल जाए. ये रहा. ठीक है. As I say, this is my customer instance. ये वाला. अब ServiceNow तो अलग प्लेटफॉर्म है, कंपनी अलग प्लेटफॉर्म है, कंपनी अलग है. ठीक है. So nobody says like we 6 people are staying or 7 people are staying in the same society. नया नया सोसाइटी है, it's a new society, we are staying together and we don't have any guard at the main gate. सबका फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा ना, यार सिक्योरिटी कंसर्न है, एनीबडी कैन एंटर इन माय हाउस, व्हिच आई डोंट वांट. इन द सेम मैनर कस्टमर सेज सॉरी, आई कांट अलाउ ServiceNow टू इंटरेक्ट विद माय एक्टिव डायरेक्टरी डायरेक्टली. नहीं, ये नहीं मैं चाहता, दैट इज टू मच, टू रिस्की. ठीक है. देन ServiceNow सेज ओके, डोंट वरी, let me introduce a concept called the mid server. MID stands for management, instrumentation and discovery. ये जावा बेस्ड एक छोटा सा कोड होता है which we execute or run on the customer instance. और फिर ServiceNow इससे इंटरेक्ट करता है यहां पर जाकर. And in this server, we have a authentication for the customer environment. और फिर वहां से जाके सारी कस्टमर की इंफॉर्मेशन लेके आता है. If I remove the security guard from the main gate, chances of security incident is 100%. If I keep the guard, then chances of security incident will be very less. ठीक है, तो ये कंसेप्ट काम होता है. सो मिड सर्वर इज दैट विच इज द ब्रिज बिटवीन ServiceNow instance and the customer instance. If you want to do the integration of ServiceNow with any other tool, mid server is important and required. Important भी नहीं बोलूंगा, required बोलूंगा मैं, क्योंकि you want to access the customer data. और कोई भी कस्टमर आपको ऐसे नहीं जाना देगा. They need something in the secure in between.
ठीक है. Now in the LDAP only two things are there. एक होता है यूजर्स और एक होता है ग्रुप. सिर्फ LDAP में दो ही चीजें होती हैं, यूजर और ग्रुप. If you want to see ना, do one thing, go to your Outlook ऑफिशियल अपने ऑफिशियल इसमें ईमेल में Outlook, click on your name, it will open a pop-up. Go to organization, or if you get a tab called group, पहले होता था, अब तो नहीं शो करता, पहले होता था कि which group I am part of. Earlier it was there, but now it's like hidden or something, that particular part. So you can see. So when I was with Accenture, I can see, because 2009 की बात है, बहुत पुराना, उस टाइम तो इतना ये भी नहीं था. So I can see I'm a part of Accenture Pune, Accenture Men, Accenture Freshers or ASCs, Accenture this, Accenture that group. So all that group is coming from the AD for me. जो हमारे पास मास ईमेल आती हैं in our companies. How that came? मैं नॉर्मल आउटलुक की बात कर रहा हूँ, नॉट टॉकिंग अबाउट सर्विस नाउ. हाउ दैट केम? अरे तुझे मेल आया, मुझे नहीं आया. अच्छा, यू आर SSC, आई एम अ मैनेजर, so this mail is only for the managers. How they come to know? Because you are part of that manager group in the Active Directory. So दो तरीके हैं, या तो मैं all users को मैन्युअली क्रिएट करूं सर्विस नाउ में. अब प्रॉब्लम क्या है उसमें? The problem is that if tomorrow one employee is leaving, how I will make sure कि उसके सारे एक्सेस खत्म हो जाए? If I create one user in 5 different tools, I have to be deactivate in the 5 tools as well. But if I sync the data from the LDAP, अभी क्या होता है, जब when you resign on your last working day, what happened? They just go to Active Directory and in your profile they click active is equal to false. बस उसके बाद आपके सारे एक्सेस बंद हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि जब मेन में ही एक्टिव फॉल्स हो गया तो बाकी में जब सिंक होगा तो सब एक्टिव फॉल्स अपने आप हो जाएगा. यू कांट एक्सेस एनी अदर टूल. इसीलिए AD is considered as the source of truth about users and the group. अतुल, अभी डेटा आता कैसे सर्विस नाउ में? देखो, if you see this particular part, we know import set, we know transform map, we know user and we know group. ServiceNow provided us everything out of the box. LDAP. For the LDAP, we need the LDAP server, जहां से वो इंटीग्रेशन होगा. And then we can see data sources. One data source for group. Data source वही वाला है, load data in ServiceNow वाला जो हमने ट्रांसफॉर्म मैप में किया था. ठीक है. If you see this, one for the group, one for the user. If you click on the user, you can see target table is user table. Import set table का नाम भी देखो लिखा हुआ है. And this is my transform map. You want to test? You want to see? Earlier in the PDI we can do this integration as well live, but अब नहीं कर सकते क्योंकि LDAP सर्वर्स नहीं है हमारे पास. याद आया ट्रांसफॉर्म मैप? ये वही चीज है और कुछ भी नहीं. The only intention to tell you this thing because this is a very common stuff can be asked in the interview, and also it give a clarity for the mid server as well. Either you are doing the discovery, either doing the integration. This is an important point. Mid server is very important. Remember, mid server is very important. No customer will allow
to interact ServiceNow directly their infrastructure. They need someone in the picture. It's called the mid server. Doubt, question, clarification. सर अगर वी हैव आपके कंपनी में भी सर्विस नाउ है एंड आई एम आल्सो यूजिंग सर्विस नाउ इन माय कंपनी एंड दे वांट टू गेट इंटीग्रेट, तो मिड सर्वर लगेगा उनको? In this case, na, it is totally depend on the use case to use case. Generally, companies say yes, कि we need a mid server in the picture. Okay. इसलिए मिड सर्वर एक्चुअली मतलब व्हाट इट डज, मतलब लेयर्स मिड सर्वर बेसिकली क्या है? It is a number one. It is installed in customer environment. ठीक है? तो ये तो सबसे पहले तो ये है. दूसरा, mid server check that who is coming to my place. What is his authentication? ऑथेंटिकेशन पास है तो ही मैं आगे जाने दूंगा, अदरवाइज नहीं जाने दूंगा. देखो, हम सर्विस नाउ से बहुत चीजें भेजते हैं, राइट? दोस थिंग्स गेट फिल्टर्ड इन द मिड सर्वर, और यहां से सिर्फ फिल्टर होकर कुछ ही चीजें आगे जाती हैं कि क्या इनपुट चाहिए, आउटपुट आएगा और यहां से वापस भेज देगा. तो जो हमने मैपिंग और ये किया, ये सब मिड सर्वर में हो जाएगा ना, मैपिंग? और नहीं, मैपिंग सब आपको यही होगा. मिड सर्वर तो सिर्फ उसको रीड करता है, अच्छा क्या आ रहा है, अच्छा, मुझे क्या भेजना है आगे, बस. फिल्टर का काम कर रहे हैं. हाँ, फिल्टर भी नहीं बोलूंगा, एक तरह से फिल्टर और ब्रिज का काम करता है ऑथेंटिकेशन के लिए भी. अच्छा, तो वो एवरीबॉडी, ऋतुजा, अन्वेषा, सुनीता. ये Now, जो सोप मैसेजेस है वो रेस्ट की तरह ही है क्या? हमने रेस्ट मैसेज लिखा, सोप नहीं लिखा हमने. ऋतुजा, No, आई एम आस्किंग. देयर इज अ डिफरेंस ऑफ राइटिंग दिस टू. मतलब टेक्निकल Okay. डिफरेंस है लिखने का, बट थिंग्स आर ऑलमोस्ट सेम. कि भाई हेडर्स एंड फोटोस यू हैव टू पास बॉडी, बट वी यूज द रेस्ट मैसेजेस मेनली. ठीक है जी. Now the last topic which we left on Friday, formatters. ठीक है. Will not take much time on this particular part. Formatters are something, the records which are not has a value on the, or not, what I can say, not exist on the form level. जैसे ये है, ठीक है. Let's say if I change this thing and click on the submit. ठीक है. Now, if you see this, these things get recorded here. ये पहले वैल्यू क्या थी, अब वैल्यू क्या आ गई. ये फॉर्म पे कहीं नहीं है, बट वी कैन सी दिस थिंग्स इन द, ये दिस इज कॉल्ड द एक्टिविटी फॉर्मेटर्स. ठीक है. आई शो यू द एग्जांपल ऑफ द चेंज एज वेल, राइट? दैट इज कॉल्ड द प्रोसेस फॉर्मेटर्स. ये जो आपको दिख रहा है पूरा, ठीक है. So formatter is basically which is not available on the form. That record is not available on the form, but you want to be recorded. ठीक है. और by default this activity formatter is activated or available on the task table. वो ऑलरेडी है उसके ऊपर. ठीक है. एक ट्राई करके देखते हैं.
tables. सॉरी, इसको ना ऐसे करते हैं, ये रहा, ठीक है। Now see, do we have any activity formatter here? यहाँ पे नहीं है, right? Now if you go to the this one, let's say incident के, हम इस पे जाते हैं, configure form layout पे चले, हाँ चलो form layout पे चलते हैं। देखो यार, प्रोसेस फ्लो, प्रोसेस फ्लो इज माय फॉर्मेटर, ठीक है। इफ यू स्क्रॉल डाउन लिटिल बिट मोर, यहाँ पे एक्टिविटी करके नहीं है क्या कुछ, something called activity formatter as well. जो नहीं पहले वो तो टेबल में ऐड करेंगे इंसिडेंट में या चेंज में, नहीं, क्योंकि एक्टिविटी फॉर्मेटर इज अवेलेबल ऑन द टास्क टेबल आउट ऑफ द बॉक्स, और जितने भी टेबल एक्सटेंड होते हैं टास्क टेबल से, उसमें भी होगा फिर वो। लेट मी चेक ऑन द इंसिडेंट टेबल वंस, क्योंकि मैंने ना कहीं तो देखा था यार ये शायद, या मैं किसी गलत नाम से ढूंढ रहा हूँ, ये एक्टिविटी के नाम से भी नहीं है, not sure मैं किस, I'm checking the wrong name maybe. So how we can create this? You can go here, all and formatters. यहाँ पर the formatter work mainly on the, what I can say, XML format. ये XML में काम करता है, so I can show you some tables here. देखो ये एक्टिविटीज, ये देखो ये इंसिडेंट अलर्ट पे, सॉरी इंसिडेंट टेबल पे नहीं है, टास्क टेबल पे देखें हम जरा, इनलाइन इस पे भी नहीं है, ऐसा क्यों है? लेकिन ये अटैच नॉलेज इज अ फॉर्मेटर, चेकलिस्ट एंड ऑल द थिंग्स आर फॉर्मेटर्स। जैसे हमने उसका देखा चेंज में प्रोसेस फ्लो था, ये वाला। सो इफ यू ओपन दिस, वी कैन पुट क्रिएट द फॉर्मेटर, और यहाँ पर हमें XML बनाना पड़ता है उसका एक, एंड देन वी टू मैप दैट टू द पर्टिकुलर टेबल। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट वी नेवर यूज इट, मतलब जो आउट ऑफ द बॉक्स है वी यूज ओनली दैट पार्ट ओनली, so because it is all about the XML code only, how you build it, that XML, then you can use that XML in the formatter on the table, and you can use this particular part. The only thing which is, because it is a, I guess, part of the admin in the CSA training, in that also they show only this thing, that formatter is something like on the incident table we have these things. अरे यार कहाँ चला गया? ठीक है, activity one, or on the change you see the process one, that is called the process formatters. And also ServiceNow introduce a parent breadcrumb formatter as well. मतलब parent का status और child का status क्या है, record का status क्या है, that you can track as well with the parent breadcrumb formatter. ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन है शायद मुझसे किसी ने पूछा भी था इंटरव्यू में, what is formatter? So I thought maybe to do some formatting kind of things, but later when I found format is something which are not the records which are not available on the form, but you want to record it, then we use the formatters like this. So about this small things only here. With this, we have completed our this training as well. Let me come back here and show you something quickly. अगर कुछ रह गया है इसमें? No, all has been
Done. Here and yes. And doubt, question, clarification, guys. No doubt, question, clarification. No, sir, not such. Okay, good. Okay, so we'll close it formally, definitely this session now. Okay, before I close it, if possible for you guys, you can switch on the camera. Twin camera को दिखाना है. If possible, that will be good. क्या पता किसी मोड पर कहीं मुलाकात हो जाए तो समझ में तो मैं किससे बात कर रहा था. ठीक है. So with this, thank you so much everybody for your time, for your patience, for your faith on me, for your spouse, your family who gave me chance. हाँ बस ठीक है, it's all good. ठीक है, who gave me chance. अच्छा दोनों आ गए. ठीक है, who gave me chance to serve you, to share my knowledge with you all. ठीक है. Definitely it's a little lengthy journey, expected more than expected time, 39 days हमें लगे, 30 days का target था, but still we were able to complete on that particular part. Before I close, the way we started our session, the same way I want to be close as well. Let's take a few seconds, a break, pray to God who give us the power, strength कि by 40 days हमने इकट्ठे काम किया, तब up and down चलते रहे, घूमते रहे, इधर उधर भी चलते रहे. So let's take a break and then finally we close this session. Okay. Yeah. Okay. Any feedback? Mac बहुत मुस्कुरा रहे हो. That one thing is it's getting recorded, so be careful a little bit more. ठीक है. Any feedback? I saw a few of the recommendation I received already from I guess Amisha, Harshal. ठीक है. Any feedback you can want to be give, you can give me here, no problem. बस हो गया. No question, no clarification, no doubt, no feedback. सर फीडबैक तो नहीं है एक्चुअली, बट काफी थिंग्स क्लियर हो गई एक्चुअली. मतलब मैं जो नजरिए से देख रहा था सर्विस नाउ रेमेडी दोनों को, इट्स क्वाइट डिफरेंट एक्चुअली. मतलब conceptually or what we want to do in service now, that is clear now. Okay, good. Thank you. Amisha आराम अगर आ रहा है उसको ले आओ, कोई दिक्कत नहीं. If it's disturbing you. ठीक है. He's playing actually. Yes. उसने भी सर्विस नाउ सीख लिया बैठ के. That's fine. Sir, if you have problem in the future, we can contact you. Definitely yes. So I already added you in the alumni group now. Okay. Yes. If nobody answers that part, you can just message me as with that. I can reply on that particular part. Okay. Sir, one thing actually I'm looking for the BA or any part actually from ServiceNow support or something. So वहाँ मैं post कर सकता हूँ क्या कि कोई मुझे बताया करके, अगर opening रहेगा तो? You can post it, but generally I saw that group is not that much active actually. People did not active too much on that group. Achha. But if you want something, then definitely that you can reach out to me on that product. First you discuss with me. If looks good, I can ask you to forward that message in the group as well. Okay sir. Okay. Yeah. ठीक है जी. Yes sir. Okay. चलिए, from Thank you so tomorrow much. you are free from my side. Enjoy your mornings, early mornings, your afternoons with your families, your spouses. The only recommendation, only thing which I want to be say, please don't stop the practice now. It is just 5% we learn now and still 95% left in the service now. That you have to build, you have to be learned by your own way, your own pace as well. Okay, please keep practicing. Join the ServiceNow community. Try to be answer the questions on the community so that you can learn more and more on that particular part. ठीक है, that is a recommendation. तभी चीजें आगे बढ़ पाएंगी. Yes, Harshal, go ahead. Sir, I have one update actually. Sir, मेरा 10 दिनों बाद CSA है. Nice, good. For the CSA, only one thing recommended. Hello.
For the CSA, only one thing recommended: go to the ebook which you receive, go to the labs in that one, and again I'm saying the ebook is Bible for you. Don't go here and there. Don't ask anybody to any practice question kind of things. Don't go. Only ebook. 3 से 4 बार word by word, line by line पढ़ना, that is important for you. Okay, sir. ठीक है. And जो labs है उनको पढ़ना और फिर करना. Don't say कि हाँ मुझे आता हो जाएगा, because how the questions come in this CSA, they can ask the questions from the labs as well. कि how you do this particular part. हमें लगता है कि हाँ इस पे क्लिक किया उस पे क्लिक किया काम हो जाएगा. No, that's not the case. You have to be read word by word. I'm telling you. Read the ebook 4 times and labs 2 or 3 times more. That's all. Your exam will be done. Okay, sir. Easy है. So don't go ahead for anything else कि मुझे कुछ मिल जाए और मैं I can able to do this particular part. Okay, sir. Okay. That's it. ठीक है. Yes. चलिए, we'll take a quick attendance. वो तो रह गई हमारी आज की. Everybody present today. Can you share this Excel file in which topics are mentioned? Already shared, I guess, in the group. मैं फिर भी भेज दूंगा हमेशा. Maybe you are okay. I'll put the agenda, no problem. ठीक है. चलिए guys, thank you so much for connecting with me. Hope to be see you in some other day. कहीं ना कहीं किसी मोड पे किसी राह पे ठीक है मुलाकात होगी. ठीक है. If you come to India Mac, let's try to connect. ठीक है. For sure. बाकी if I go to Pune और Delhi, I'll definitely connect with you guys, हर्षल और ऋतुजा. कोलकाता का तो प्लान मेरा नहीं बनेगा शायद. Definitely it's very far for me, but we'll plan something. कोलकाता में नहीं है, हम लोग बेंगलुरु में हैं. चलो बेंगलोर, I'll try to come Bangalore if possible. ठीक है जी. मैं तो यहाँ पे हूँ, आप आ सकते हो. We'll try ऋतुजा definitely. ठीक है. चलिए guys, take care. One last question. Yes, go ahead, Mac. Go ahead. So in ServiceNow, there are lots of modules, right? And for the fresher, it's very hard to get a job in ServiceNow if you don't have any real-time experience. Right. So any possibility to gain a real experience from someone currently working in a particular domain to have some real experience and then go for the interview and write some experience on the CV? देखो, for this partner, actually, this is very, very crucial thing because the current situation says that fresher has no experience, but everybody is looking for the experience only. Right. To do this part, to do this particular thing, what I recommend, try to create your own application. देखो, आपको you need a practice. See, nobody is going to be give you the free job. You try anywhere, nobody say, okay, come to me and learn from me. There's no way to do that particular. It's a very, very bitter truth here. So to get a practical experience, what I say, think a small use case in your mind and try to build that application, because from that part, your doubts will get clear. That is the one part. And I say, if you want to learn more, go to ServiceNow community. That is only the best thing to be learned. That will give you the real-time experiences. Because वहाँ पे लोग fake question नहीं पूछते, वहाँ पे लोग actual questions पूछना, which they're facing in their projects, in their accounts, in their customers' perspective. Try to answer that part. क्योंकि learning वहीं से होगी, but experience, no way. Okay. That's the only thing. Alright. ठीक है. Thank you. चलिए, good. You are free from me from tomorrow onwards. Enjoy your mornings, enjoy your evenings with your family. Have a nice Monday. Have a nice weekend. Have a nice life ahead. See you soon in some other day. Take care and bye bye, guys. Bye bye. Thanks, Atul. Bye. Take care, everyone. Bye bye. Thank you. Thank you. Bye bye.